Hello, all our esteemed viewers, respected learners of English language, examination candidates, those are under preparations for different type of competitive examinations of government jobs. You all are heartily welcome to your favorite channel KCP Competitive English Part 116. Today also we have on the same topic translations, but today we have a different type of class going to present you, that the conversation. What is conversation? Conversations means conversation is a synonymous with talk, chat, dialogue, discussion or exchange of words. Yes. So how to make conversations in English? Yes, language of conversation or talk needs a special skill. Okay. We use the shortest sentences in our daily talking or the general conversations. We use the shortest sentences or expressions while talking to persons, and moreover the language is based on especially with the courteous manner, because it is an international language. Okay, from this example we have started an example for you. We are going to also present you, we are going to teach you. You can learn that from this example of dialogue. Let us see how to make oral exchange of sentiments. How to make oral exchange of sentiments, observations, opinions or ideas in English. Also, yes, also typical conversations or discussion. Typical conversations or discussions ignores the grammar rules. Okay, so let us start and look at our teaching video, and you will learn, you will know everything if you watch till its end. Okay, yes, this is the conversations between the two persons, talking between a passenger and a driver. Okay, a passenger wants to go to the airport to catch the flight. Okay, so he was looking for a taxi or the taxi driver. Okay, to make conversations about the route of the airport, about the fare of the taxi, about the timing of the flight, everything the passenger wants to know. Okay, so let us make conversations between the two persons, passenger and the taxi driver. Yes, कौन कहूँ देखु आपणकर ओडिया को आसवा, ओडिया को आमे कहवा, तापर इंग्लिश मध्य लिखा जाइछि, ताकू मध्य आमे कहि देबा. ओके, यात्री माने पैसेंजर, यात्री कहूँ टैक्सी टैक्सी, पैसेंजर यस टैक्सी टैक्सी, ओडिया रे मत जा इंग्लिश रे मध्य ता से डाकुछि टैक्सी टैक्सी. यस, ड्राइवर कहउचंती हाँ सर, आपण कौन टैक्सी भड़ा नेबा को चाहती कि? हाँ सर, कौन आपण टैक्सी भड़ा नेबा को चाहती कि? ड्राइवर यस सर, वुड यू लाइक टू हायर द टैक्सी? यस, तापर पैसेंजर कहउचंती यात्री ना ना, मु केवल किछि पचारिबा को चाहे, विमान बंदर जीवा पई मु केउठी खंडे टैक्सी पाई परिबी? पैसेंजर कहउचंती भल भाव आप शुणु. पैसेंजर कहउचंती ना ना, मु केवल किछि पचारिबा को चाहे, विमान बंदर जीवा पई मु केउठी खंडे टैक्सी पाई परिबी? ताको इंग्लिश रे कहा जीवो नो, आई जस्ट वांट टू मेक एन इंक्वायरी. देखो मेक एन इंक्वायरी, where can I find a taxi for the airport? Yes, तापरे ड्राइवर कहउची जे कोन हेई तो आपण एठारे ही पाई परिबे, मु ही आपण को विमान बंदर को नै जीबी. क्यों विमान बंदर सर? एटा पचारुछि, ड्राइवर पचारुछि आपणकर यात्री को. हेई तो
से तेले कहूची जे मु खंडे कोठी टैक्सी पाई परिबी, वेयर कैन आई फाइंड ए टैक्सी फॉर द एयरपोर्ट। ये कहूची ड्राइवर हेई तो आपण एठारे ही पाई परिबे, मु ही आपण को बंदर को नहीं जीवी, माने एयरपोर्ट को नहीं जीवी, विमान बंदर को नहीं जीवी। अच्छा क्यों विमान बंदर सार, एटा ड्राइवर पचारिला। इंग्लिश रे कहूची वेल यू हैव इट राइट हियर, वेल यू हैव इट राइट हियर, आई कैन टेक यू टू द एयरपोर्ट, व्हिच एयरपोर्ट सर। तापरे यात्री कहउचंती इंदिरा गांधी विमान बंदर। अच्छा भड़ा केते पड़िबो, से कहबे इंदिरा गांधी विमान बंदर भड़ा केते पड़िबो। ओके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, व्हाट इज द फेयर, व्हाट इज द फेयर। तापरे ड्राइवर कहउची गाड़ीर मीटर अनुसार मु भड़ा नेबी सर। ओके आपण को प्राय 700 टंका पड़ी पारे। से उत्तर देले गाड़ीर मीटर अनुसार मु भड़ा नेबी सर, आपण को प्राय 700 टंका पड़ी पारे। ताको इंग्लिश रे कहा जाउछि आई विल चार्ज यू बाय द मीटर रीडिंग सर, आई विल चार्ज यू बाय द मीटर रीडिंग सर, द फेयर मे कम अबाउट Rs 700। देखो तो कम ए जगह रे आसुछि, द फेयर मे कम अबाउट रुपीस 700। तापरे से कहउछि पैसेंजर कहउचंती, यात्री कहउचंती ठीक अछि चलो जीवा, ये बैग गुड़ी को टिके रखी देबो कि। पुणी कहउचंती ठीक अछि चलो जीवा, ए बैग गुड़ी को टिके रखी देबो कि। इंग्लिश रे ऑल राइट। देखो ऑल राइट कहा गला, ऑल राइट काहे की कहा जाय, satisfactory or agreeable sense रे, in the sense of satisfactory, in the sense of agreeable we use all right। सेति पई से कहले ठीक अछि all right, would you help me with these bags। देखो तो ये बैग गुडी को टिके रखी देबो कि, ताको इंग्लिश रे से कहउची would you help me with these bags। ओके courteous language सर्वदा यूज करा जाए इंग्लिश रे, because इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके तापरे ड्राइवर कहउची निश्चित भाबे सर से गुडी को कार रो पछपटे रखी दउची। निश्चित भाबे सर माने आपण चिंता करंतु नहीं, तार अर्थ से गुडी को माने से गुडी को मु कार रो पछपटे रखी दउची। ये कहले बाय ऑल मींस सर, बाय ऑल मींस काहे की व्यवहार करा जाय, बाय ऑल मींस रो अर्थ मोस्ट एश्योर्डली और सर्टेनली अर्थ रे बाय ऑल मींस यूज करा जाय। सेति पई से कहले निश्चित भाबे सर, बाय ऑल मींस सर से गुडी को कार पछपटे रखी दउची, लेट अस पुट देम इन द बूट। ओके एपरि भाबरे माने कन्वर्सेशंस ता शॉर्टेस्ट लैंग्वेज, तापर इकोनॉमिकल लैंग्वेज बहुत माने स्किल रे कम समय भितरे जिमती कथा कहा जाय पारिबो। वी हैव ऑलरेडी that means the advice you that, and also the talking or conversation ignores the grammar rules। okay this much for today, and this dialogue or exchange of the conversations we shall continue in our next class। thank you for watching our lessons KCP Competitive English part 116।